नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे जी, जो पहले भी हमारे चैनल पे एक दो बारी आए हैं। इनके साथ एक मैंने इन पर्सन पॉडकास्ट भी कराया एंड आई हैव रियली ऑलवेज लर्नड विद सर। हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम। थोड़ा टाइम पहले हम मिले थे कश्मीर में एंड तो उसके बाद ऑब्वियसली ये पहला कॉन्वर्सेशन उसके बाद है। आज मैं सर से बात करने वाला हूँ दो छोटी छोटी चीजों के बारे में। सबसे पहले आर्मी चीफ ने एक बड़ा लेक्चर दिया था, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था आर्मी डे से पहले, जहां पर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड गेम क्या है। और दूसरा, इक्विपमेंट की काफी बात की जाती है। कई लोग ये भी बोलते हैं भाई आर्मी के पास पूरा पहनने को इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है, देखो फोटोएं देखो, कोई जीन्स पहन के घूम रहा है, कोई ये कर रहा है, ये कैसा स्टैंडर्डाइजेशन है, ये क्या है। तो इसके ऊपर somebody who's served in that region, especially J&K के अंदर, and in the worst of the times actually सर ने सर्व करा है वहां पर। तो लेट्स फाइंड आउट सर का क्या नजरिया है एज अ कोर कमांडर इन दैट रीजन। सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो सर। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड आई रियलाइज कि आपकी जो फॉलोअरशिप है काफ़ी अच्छी है। और आपके मैं ट्वीट्स देखता रहता हूं, तो उस ट्वीट्स के अंदर भी मुझे कई बार आपके अंदर का गुस्सा नजर आता है, खास तौर से जो हमारे सो कॉल्ड नेशनलिस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। हाँ, कहने को तो है सुपर। इंडियंस, बट वो ये चाहते हैं कि हमारा दुश्मन हमसे जीत जाए ताकि वो सच हो जाए। एक होता है ना, यू वांट टू बी क्रिटिक, you want to advise, but the language and tone and tenor ये दिखाता है कि वो how much they hate। तो वही काम हम करें तो खराब है, वो जब कोई गोरा आदमी करे या दुश्मन करे, so that is same, so we'll talk about it as जी we progress, so we can start the way you want to। सर, सबसे बड़ा पहले बीच में आएंगे इक्विपमेंट के ऊपर, बट आर्मी चीफ ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली उन्होंने, जो हमारे रेडार में हमेशा कभी नहीं रहती, विच इज बेसिकली अबाउट मॉडर्नाइजेशन। पब्लिक नैरेटिव में कभी भी आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बात नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं हाँ नया हथियार आ गया, नया ये आ गया, नया वो आ गया। बट एक चीज जो है, जहां पर वो चीफ सर ने बताया कि भाई द वॉर इज चेंजिंग एंड हमको भी उस तरह से बदलना पड़ेगा। वेरी टॉक्ड अबाउट एआई एंड ऑल दैट थिंग्स। सर, वेयर आर वी एज फार एज अ मॉडर्नाइज्ड आर्मी इज कंसर्न्ड? अभी दुनिया में कंपैरिजन ही होता है। आप ट्विटर पे भी देखिए, ऑनलाइन फोरम पे भी देखिए, अच्छा भाई टैंक टू टैंक, इसमें ये टेक्नोलॉजी है, इसमें ये नहीं है, ये वो, ऑल दैट। हम लोग किस जगह पे बैठे हैं सर इस टाइम पे, इन अ ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव? सबसे पहले मैं आपको चीज बताऊं। हमारी जो एक आर्मी है, वो उसकी संख्या ऐसी है कि अगर मैं ये एक पेन बोलूं कि हर जवान के पास में इस किस्म का पेन होगा, और इस पेन की कीमत 25 रुपए है, तो 1.4 लाख आर्म फोर्सेस अगर देखा जाए, तो स्ट्रेट अवे आपको 25 लाख रुपए नॉट खर्चने पड़ेंगे। उसका एक छोटी सी चीज का चेंज का ही है। और यही चीज को मैं जब चेंज करता हूं, तो हर एक के पास में एक बैकएंड सिस्टम से मैन्युफैक्चर करके जब तक मैं इसको दूंगा, तो एक जो फैक्ट्री बनेगी, बिकॉज मिलिट्री इक्विपमेंट आर वेरी स्पेशलाइज इक्विपमेंट। वो एक रन ऑफ द मिल इक्विपमेंट नहीं है कि आप सैमसंग फोन खरीदने चले गए या टीवी खरीदने चले गए, तो उसकी फैक्ट्री ऑलरेडी स्टैब्लिश है, आपने उसको बोला स्केल अप करो, और उसको स्केल अप करके और तुरंत बन गया। और फिर इसकी जो इंडक्शन की प्रोसेस होती है, वो भी एक अलग प्रोसेस है, क्योंकि यही पेन जब डेजर्ट में काम करेगा तो एक सैंड के ऊपर रगड़ने से ये खराब हो जाएगा इसका नहीं। यही पेन मैं अगर ग्लेशियर पे जहां पे मैं रहा हूं वहां जाऊंगा, तो इसकी इंक फ्रीज हो जाएगी, तो इसके अंदर कुछ किस्म की ऐसी इंक डालनी पड़ेगी ताकि ये फ्री फ्लो होकर के चलता रहे। यही पेन एक ह्यूमिड इलाके के अंदर जाने के अंदर ये विद इन 2 हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी और ह्यूमिडिटी हो जाएगी। सो ये जो हमारा एक कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारे लोग ऑपरेट करते हैं, पानी समुद्र से लेकर के जंगलों तक, जंगलों से डेजर्ट तक, डेजर्ट से लेके पहाड़ी और माइनस टेम्परेचर के अंदर, इन सब चीजों के लिए खरीद फरोख्त करना इतना आसान नहीं है। सो ये सबको लगता है कि ये बाजार में नया माल आया है, आज ले लो और ये तुरंत यहाँ पे हर जगह बिक जाएगा। द सेकेंड इज यू कैन बाय एन इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस होता है। उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए एक नया स्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपने मुझे ट्रेनिंग दी, मैं 30 साल मैंने फौज के अंदर नौकरी करी आज, और सडनली एक नया किस्म का इक्विपमेंट आ गया, आपके हाथ में दे दिया, आपको उसको चलाना नहीं आता। आपके पास पुराने वाले की, आपके पास 35 साल 30 साल आपने ट्रेनिंग करी है। दिस न्यू इक्विपमेंट ऑल्सो हैज टू बी अब्सॉर्ब, नॉट ओनली अब्सॉर्ब, फॉर विच आई हैव टू बी ट्रेन, फॉर विच एवरीबडी हैज टू बी पैरेलली इन सिंक। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास वो नया इक्विपमेंट आ गया और तुम्हारे पास पुराना है।
तो तुम्हारे पास पुराने किस्म का कम्युनिकेशन सेट है, रेडियो सेट, और मेरे पास नया है। हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। आपके पास में पीसी लेटेस्ट मॉडर्न पीसी है, और मेरे पास पुराने वाला है। आई एम ट्राइंग टू एंगेज, द सॉफ्टवेयर डिफरेंट। सो एवरी स्मॉल लिटिल चेंज has got a gestation period which takes time to firstly check it, research about it, try it, and thereafter roll it out slowly in phased manner so that everybody gets it. जब तक ये रोल आउट होता है इतनी बड़ी फौज के लिए, तब तक तेजी से कोई नई चीज आती है। द सेकेंड व्हाट हैज हैपेंड इज द पेस ऑफ चेंज। ये जो पेस ऑफ चेंज था 50 साल 100 साल पहले, एक मालूम चला भी टाइम करके किसी कोई किस्म का चीज है, तो उसके लिए चोरी छुपे कहीं पर हिडन तरीके से कार्रवाई होती थी, ट्रेनिंग होती थी, प्रैक्टिस होती थी, फैक्ट्रियां बनती थी, वो रोल आउट होता था, एंड देयर आफ्टर टू बी इंडक्टेड, एंड देन इट यूज्ड टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 3 to 4 decades, 5 decades। आज आपने जब वो टैंक की डिजाइन आज बनाई है, within couple of months the new design which is going to defeat in terms of ammunition comes in. Now you require to protect it from the next set of ammunition. So you imagine यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए आप, ड्रोन, एंटी ड्रोन, ड्रोन अगेंस्ट द टैंक। टैंक कहते हैं लोग कि अब ये खत्म हो गया, अब तो कैसे चलेगा, तो सडनली वो रशियंस ने उसके ऊपर एक सिस्टम बनाया इम्प्रोवाइज करके, और उसके ऊपर ताकि ऊपर से टॉप अटैक होता है तो कैसे करना है, उसको छुपाना कैसे, एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे लगना है। सो यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग नाउ एक्सट्रीमली फास्ट, एंड whom are you going to use? सबसे बड़ा इसका जो एलिमेंट है, you can create structures, you can raise organizations, but can you train a manpower? The manpower comes from the rural, semi rural, 10वीं पास आदमी आता है, और आप उसको चाहते हो सडनली बिल्कुल मॉडर्न सिस्टम, वो टैंक, आरटी, गन्स, रॉकेट, स्पेस, कम्युनिकेशन। और जब हम कहते हैं कि भाई अब अग्निवीर नहीं होना चाहिए, अग्निवीर ठीक नहीं है, और आप सॉरी पुराने वाले सिस्टम में चले जाओ, तो पुराने वाले सिस्टम को आप कैसे, एक आदमी जो 10वीं पास है और उसने पुराने सिस्टम से सीखा हुआ है, हाउ आर यू गोइंग टू चेंज हिम टू न्यू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज हाईली टेक ओरिएंटेड? So these are the challenges, you know, which happen. So when what the chief has also tried, and if people have heard it correctly, rightly, that the human resource integration into the new systems which are coming is a very, very important facet. And that is why a lot of people say कि अग्निवीर is a job किसी के लिए, but हमारी organization के लिए अग्निवीर is also a system to ensure that you keep on rotating people who are younger, who are more youthful, who are concurrent, who are the contemporary aware of the modern technologies or education system which are coming up. तो जो आज 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में एक जनरेशन आज के तरीके में चेंज हो रही है, यू नो, जो जनरेशन अल्फा है वो जनरेशन बीटा से एक जनरेशन बिहाइंड हो जाती है टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन। मगर अब वो जनरेशन अल्फा को ही अगर आप, या मिलेनियम, जैसे मैं मिलेनियम से पहले का हूं, और आप मुझे बोलो कि आज जेन जी के साथ में, या जेन अल्फा के साथ में, या जेन बीटा के साथ में टेक के मामले में कंट्रोल करो, तो मेरा तो मेंटल ओरिएंटेशन, स्पीड ऑफ थिंकिंग इज नॉट दैट मच। You require people, so there is a whole process of training and inducting and changing the human resource. So he is so beautifully deliberated upon कि हमारी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। हम अपनी जो आर्मी वॉर कॉलेज है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर हम रीच आउट करके एकेडमिया और टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के साथ में इंगेज करके अपने फोर्सेस को अपग्रेड करेंगे। सो व्हाइल वी मे गेट and new equipment will rapidly change, we also need to rapidly change the mindset and the capacity of handling the technology by the newer generation which is coming up, or the older generation to absorb it. And the other part, sorry, please. I just cover one more part. The other is where our major challenge comes. Our major challenge comes is restructuring and reorganization. Like the Chinese have a system, वो जब नया सिस्टम आता है, इक्विपमेंट आता है, they raise new structures. Americans raise new structures. Somewhere अभी जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें वो फाइल बनेगी, प्रूफ बनेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर एमओडी पूछेगा कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। अच्छा, आप ये 4 आदमी यहाँ से निकाल रहे हो, तो ये तो अभी हम दोबारा से लेंगे नहीं, ये नया
जनरल क्यों बना दिया. So if you see, all our newer structures are taking huge amount of time. We need to possibly encourage our systems to become more flexible. The chief, the army commander should have a power in their hand. That okay, भाई आपके पास में 60,000 जवान हैं या ऑफिसर्स एंड जेसीओ हैं. How you want to modify should not be linked to your pay and everything. Because हमारे यहाँ तो अगर आपने एक मेजर जनरल का नाम जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया तो it has to be approved, it has to be published, it has to go for cabinet approval, and thereafter the CDA Pune will release your money. The moment you increase one or minus or change the nomenclature even, you will realize that that officer or Jawan will not get his pay forever. So this shift is required, which is not that freedom to change new structures, evolve new structures is not available with the process, because if the equipment is changing, ड्रोन आ गया आपके पास में, अब ड्रोन को चलाने के लिए आपको बंदे वैसे चाहिए, मगर आपका सेक्शन जा रहा है तो उसमें सेक्शन में आपको हुक्म आएगा कि भाई 2 आदमी कम करो, 2 आदमी ड्रोन चलाने वाले होने चाहिए. That cannot happen because you require a weapon firing platform, a human to fight this thing. So the guy who is going to operate drone needs to be maybe extra. So if you're not allowing some new additional manpower to be given because of the budget constraints, human resource constraint, you should allow the chiefs or the army commanders to pick up that manpower from elsewhere and put it into the battalion headquarter, brigade headquarter, or somewhere to run the show. That flexibility is still not there. The moment that flexibility comes, then maybe I think we'll be able to do it faster. So these are few challenges with the organization to transform and modernize. Sir, challenges though, of course, when I've been kind of researching in all armed forces, the bureaucracy in the armed forces is always a problem. The Russians actually faced it right now in this war. वो तो दिख रहा है, बहुत बुरे हाल थे initially, उनकी fuel नहीं दिया, ये नहीं दिया, काफी कुछ जंके हुए थे. Then he had to rechange the entire thing. American army के अंदर तो bureaucracy is supposed to be the worst. वहाँ तो Yeah. कुछ भी बड़ी वो पता नहीं कितने panels, कितनी committees में से जाता है. So that is a problem. I agree with you. But I want to stick it to the forces, in the sense stick to the forces, कि ये जो एक और चीज बोली जाती है कि भाई इक्विपमेंट नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों डिले होता है. अभी वो कोई एक गन है, कोई दूसरी गन. आई डोंट वांट टू गेट इनटू स्पेसिफिक इक्विपमेंट एज पर से, बट इक्विपमेंट इज आल्सो कलेक्टिव विद द बजट, कलेक्टिव विद द लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड दिस एंड दैट एंड ये वो. नाउ यहाँ पर सर जो रिक्वायरमेंट्स है आपकी, बिकॉज वो बदलती रहती हैं एज दुनिया में जो चीजें चल रही हैं. अभी इजराइल गाजा वॉर से भी कुछ लर्निंग्स आई होंगी, तो उसमें भी वो भी इनकॉर्पोरेट करना है. तो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट आप देख रहे थे, नाउ यू फाइंड नहीं यार, इफ यू बाय दिस वी विल नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी, नाउ यू लुकिंग एट अनदर वन. तो ये भी चलता रहता है सर. हाउ डज दी, आई मीन करंट जो चीफ ने भी बोला था, वी विल प्रायोरिटाइज क्रिटिकल इक्विपमेंट एंड देन वी विल लुक एट अदर थिंग्स. तो हाउ डू वी काइंड ऑफ डू दैट? I will tell you, क्या कहते हैं ना, जब भी एक डिस्कशन होता है, and we Indians are very good at discussion and debates, and it's called debating Indian. It's a very common thing which is available. और स्पेशली जिसने डिसीजन नहीं लेना है ना, वो बहुत डिबेट करता है. इक्विपमेंट जब आता है तो हमेशा 2 पहलू होते हैं. वन इज नंबर्स और क्वालिटी, right? If you, let's say for example, I'll take artillery guns, right? Do you want ranges or you want quantity of ammunition to be delivered at the ranges? If you only want ranges, तो आपको एक क्या कहते हैं गन चाहिए जिसके अंदर आप हल्का सा एम्यूनिशन प्रोपेल कर दो, राइट? यू कैन हैव मल्टीपल गन्स, यू विल हैव लार्जर एम्यूनिशन, बट देन रिलेटेड टू दैट यू रिक्वायर लार्जर ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन. Now you want to say कि I want to deliver more quantity or for this thing, I'm okay with the reduced number of guns. So you can reduce the number of guns, which will require much more power to deliver that kind of a tonnage of ammunition at the target end. तो मैन पावर कम हो जाएगी, बट टेक्नोलॉजी वैसी होनी चाहिए which has to be very very controlled technology. We can take the effect of the fuel which will burn to take this explosive or the ammunition at the target end. Second is that somebody will say यार हमारी लड़ाई तो आमने सामने नजदीकी लड़ाई है, और दूसरा थॉट आ जाएगा नहीं नहीं यार मैं हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा. सो रेंजेस हो जाएगा. So everybody will have a
a viewpoint on this. The third viewpoint comes out that I want to have the best thing which is available in the world. Because we are the forces, I need the bestest in the world. Now, the bestest is shown to you by the defense manufacturers which are not using it themselves. So like China ने वो भी एक scramjet fighter वो उसको दिखा दिया एक scene and everybody went gaga over it and हमारे पास तो ये नहीं है उनके पास. I agree, he's at least 2 decades ahead of technology in terms of technology or other 3 decades ahead of us. But fact of the matter is कि आजकल जो सबसे ज्यादा रो रहे हैं उन्होंने 30 डिकेड में किया क्या इस टेक्नोलॉजी को हमने चेस करना है, राइट? Suddenly you can't jump start for to take in technology and to make technology. Either you go and respect China कि भाई हमको खरीद के अपना दे दो सामान, ठीक है? अब आपको वो चाइना दे देता है तो आप कहते हो अब तो लेवरेज हो गया. So he will leverage equipment, he will leverage everything against you. The second is the China माल, right? चाइनीज माल के ऊपर तो चाइनीज को ही भरोसा नहीं है. जहां जहां जिस देश में जा रहा है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने चाइनीज माल दे रखा है. There's a compulsion for the Pakistanis to buy. Most of the equipment is off-road. They're not getting supply chain. They're not getting maintained. तो चाइना माल है. So there will be another group which will say, यार वो चाइना से आपने ले लिया उससे टेक्नोलॉजी और वो तो चाइना का माल खराब है. So everybody has got a view. जिसकी हो जाती है वो उसको डिफेंड नहीं कर सकता, बट जिसकी नहीं होती है which is about 70% will always not, unka view मानना नहीं जाएगा. So they will keep on crying horse. So when you want to import a system from abroad in which the competition will start from France to US to Israel to Japan, everybody, जिसका आप इक्विपमेंट खरीद लोगे सबके जो इंडियन कंसल्टेंट्स हैं बाकियों के, they will start crying horse about that system. And now the worst has come. The worst has come कि अब गवर्नमेंट साहब ने बोल दिया, मोदी साहब ने, कि आत्मनिर्भर होगा, हम तो अपने ही बनाएंगे. कैसे ही बनाएंगे? क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, क्वांटिटी होनी चाहिए. खराब हो ऐसी कंपनी तुम अपना बनाओ, राइट? एंड वी विल सी हाउ विल फाइट, बट वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव एंड व्हाट इज आवर ओन इक्विपमेंट. अब तो इसमें एक लॉबी थी जो फॉरेन पार्ट लॉबी थी जिसको खूब पैसा सब मिल रहा था, घूमने भी जाओ. एंड आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर सर्विंग और रिटायर्ड और वेटरन्स एंड गवर्नमेंट, एंड देयर आर होल बिजनेस वेंचर्स एंड राइटली सो. सबके पेट पे अभी लाभ पड़ गई. So naturally, everybody is now going to fight. In any case, we also will take time to mature as defense industry within our country because you don't have. हमारे यहाँ भी जो माल है वो लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना करके खराब माल दे देंगे, इक्विपमेंट दे देंगे, स्टफ दे देंगे. Then we have our own labor issues. We got our own challenges. You go to the defense industry or the public industry. There is a challenge of timelines to be met. They'll be slow. Their quality issue will be there. Then when you give it to Adani, Ambani or these top industries, then you say unko aapne de rakha hai. So there is a whole polarization which happens. The fact of the matter is that there is a very beautiful line somebody used to say, and I believe that the excellent or best is the enemy of good, right? Somewhere we need to accept satisfactory and good stuff to start with a certain degree of amount so that our own industry starts getting into shape. हमारी भी क्वालिटी ऑफ मैन पावर भी इतनी अच्छी नहीं है कि एकदम से हाई एंड को सामान को आप ले लो और उसको मैनेज करो. एंड वी नीड टू रोल आउट एंड कैच अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज अ कंपटीशन विद इन द इंडस्ट्री स्टार्ट्स अप सो दैट सभी इंडस्ट्री वालों का जो है मल्टीपल सिस्टम शुड कम अप. And thereafter, we have a budget, or we got the in terms of sheer numbers and volumes. We are more than about 7 to 8 armies in our country, right? अगर आप ये देखिए कि 7-8 आर्मी है तो 7-8 आर्मी के worth of defense industries can be created and they can be used to continue to carry out research along with academia, along with the research institutes. Investments होने चाहिए ताकि we keep on going ahead. Otherwise, what will happen is you buy from abroad. The COVID, Ukraine, Russian war, everything has told you that you will always be leveraged. You will not get your stuff. So very, very critical stuff which you have to buy should come from abroad. But rest of the thing, I guess, should continue to be generated from our own country. I am a firm believer on satisfactory come good. Less, because in any case, who are our competitors? Are we planning to fight a war with Americans with the best of the equipment? Or with the Israelis, or maybe I don't know. Now, thereafter, there are
hardly any armies in the world or the armed forces which are. We are the fourth, if I'm not wrong, the fourth bestest army in the world. So our competition is not there. आपका competition ही आपके इलाके के अंदर है. You know where Pakistan is. You know where the other countries in the region are, and we have to compete with China. But then we got an advantage of our terrain, which is with us. So, while they may be ahead, we have time to work for a better technology to be prepared in-house so that we can fight the Chinese without being blackmailed or leveraged by the West. कि अच्छा तुमने चाइना से लड़ना है, तुमको हम तभी सामान देंगे जब तुम हमारी बात सुनोगे. So to avoid that leverage, and that is where your national interests come about. And then, of course, you need to rely on multiple partners to help you out at times. But it can't be there that you don't have any equipment to fight a war against this thing. And trust me, the Chinese are also quite smart. They may showcase the best and all, but frankly, I'm of an opinion that they are also scared of shit. This thing, they aren't going to come fight just like that. जब उसकी लड़ाई का काम हमको परेशान करने के लिए people like Bangladesh or through Nepal or through Pakistan or through our own people who are are their runners of narrative, उसको हमारे पास physically attack करने की जरूरत ही नहीं है यार. हमारे लोग तो हमको ही defeat करने पड़े हुए हैं. He doesn't have to fight. He is actually doing his economic and other coercion, which is possible with him through shaping of the mind of our people. So while he's ahead of technology, he's our immediate competitor, I guess, right? And he's ahead, but we can catch up. The new technology allows us to catch up in terms of AI and the quantum tech and all which is coming up. But for which we have to really invest very hard and get ahead of it. So, आपने बड़ी you kind of touched very interesting points क्योंकि you have to fight the war that you have in front of you, not somebody else's war. ये नहीं होना चाहिए कि भाई उसके पास है तो हमारे पास ये होना चाहिए. That's not what is required. I mean, what you need to fight with what you can fight with. आप iPhone 70 लेके खड़े हो जाओ, अभी आपके पास iPhone 16 है, 17 है, whatever. अभी suddenly कोई 70 दे दे आपको तो समझ नहीं आएगा ये खोलना कैसे है. So, technology imbibing also takes time. So he mentioned one. क्या हुआ? The Russians had started with a new system of centralized control of artillery. Okay. And then, they had a different, I don't recall very clearly now, we're talking about it. So जब लड़ाई शुरू हुई, the system was not already embedded, tested, tried through exercises. एक नया सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम आप जब लेके आते हो या एक नया टैक्टिक्स, टेक्निक या प्रोसीजर लेके आते हो, it requires to be processed and prosecuted for the entire army, right? Because आज यहाँ का जवान कल को इस जवान के साथ में लड़ रहा है, मगर उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके लड़ने का तरीका, जब हर आदमी एक तरीके से इस तरह इशारा कर राइट को देखो, तो everybody should be looking right. It can't happen somebody's right is half right and somebody's right is full right. Similarly, it's about technology. So when you change system, it is very dangerous, and they had huge issues. Their artillery systems went for a 6. They had to revert back to the older mechanism of firing, of controlling the fires, and that is how they were able to survive and persevere thereafter. Otherwise, in first couple of months, they took a lot of beating because communication system ही फ्लॉ हो गया था. उनके जो रेडियो जो ऑर्डर्स का सिस्टम था वो बिल्कुल डिस्पैरेट हो गया और गलत हो गया था. सर, तो वही टेक्नोलॉजी इम्बाइबिंग की बात है सर. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. सर, एक छोटा सा सवाल और उसके बाद मेरे को आपसे एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, एक पब्लिक सवाल पूछना है जिसके ऊपर काफी कमेंट्री आजकल मैं देख रहा हूँ, तो वो बाद में पूछूंगा मैं आपसे. बट एक लास्ट सवाल है सर अबाउट टेक्नोलॉजी. जिस तरह से चीफ ने कुछ चीजें बोली वहां पर कि भाई वी पार्टनर्ड विद IITs, वी पार्टनर्ड विद IISCs, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, देयर इज अ होल डिपार्टमेंट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड हाउ टू imbibe AI एंड दिस एंड दैट. हाउ डू वी गेट टेक्नोलॉजी, पीपल टेक्नोलॉजी savvy, किस तरह से ये करना है आगे. एंड ये चीजें पहले नहीं होती थी, मेरे को पता है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते थे, बट इस स्केल पे, जिस स्केल पे हमको पता है आजकल हो रहे हैं. Is this a new way that the army is now trying to create its own equipment? जो जैसे एक नेवी के पास एक डिजाइन ब्यूरो है सर अपना, वो काफी इधर उधर से कुछ काम करते थे. Is there any plans for the army to come up with a design bureau The जहाँ पर अपनी smartest चीजों of को
The smartest of the three services out of compulsion were the Navy. Okay, Navy उसका रीजन है नेवी has got a stability. Okay, they got 5 6 areas where people can join hands. There were ports and stuff like that, and therefore this whole हमारा मेरे अभी in my 35 years I have seen 35 or 38 postings, right? So जब तक आप एक जगह समझते हो तब तक आपको मूव करना पड़ता है. Second is the challenge, while we are doing a lot, but I just want to amplify the challenge to people. While Indian Army today is far ahead in indigenization, virtually are. If I'm not wrong, about 2 years back or year back, just before I was retiring, it was 75 to 80% of our stuff was coming from the local produce, indigenized, right? Very few stuff was coming out from. But in our case, it is slightly different because, like Air Force. Air Force requires bilkul, the cutting edge technology to remain ahead and to be flying. And in any case, we don't have systems to produce stuff which Air Force requires in our country, which is fine. He is airborne, वो तो बिल्कुल machine के ऊपर है. The machine has to be in perfect harmony to fly. You may train the man, but the machine has to be very, very good quality in terms of every piece which is there. Whereas in case of Navy, we can still have this thing, but in case of Army, it is possible. The We have engaged with IITs, we have engaged with institutes of excellence and all over the place. We are engaging with academia. I've been watching it myself. I've been also partner in a couple of things. Something of this Army Design Bureau and all. They got officers posted in these areas. You got veterans who are also deployed, engaging to explain to the academia and the research institute कि भाई आर्मी की ये requirement है, इसको testing. As a corps commander in which we used to have a system. पहले सामान आया, उसको उड़ाया, चेक किया और उसके ऊपर लिख दिया कि ये 10 रीजन है अनफिट फॉर एब्जॉर्प्शन इन इंडियन आर्मी, राइट? बिकॉज वो एक इट इज ऑल्सो अ फियर, बाय द वे, राइट? अगर आपने लिख दिया तो ये बोलेंगे डीपी पांडे का इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कुछ खाया पिया है और इसलिए किया है. सो दोस that's what I'm saying, that there is a lobby which will say that the processes are slow. The moment we make the process stop, the same lobby is going to say that there is something fishy. So then a broad directions came, and it's a good direction which we tried to ensure that every startup which came to us, let's say we required to fly at a height of 10,000 feet and fly a distance of 20 kilometers to carry a logistics drone, logistics stuff for 20 kgs worth. अब वो 20 kg ले जाने के बदले में 15 kg लेके गया. Instead of flying at 10,000, was flying at 9,000, right? So then we will endorse. We have checked for 9,000 feet. We have checked for 15 kgs. Instead of flying in X, Y, the same, it can be suitably employed and used in, let's say, Akhnur or in the plains. The system is fit. However, the system also, if it has to be fielded here, they need to. Now there's an engagement happening because now we got high tech qualified officers who are being trained in this whole system. So they will also write that if you carry out this changes in terms of control, communication, instead of having line of sight, it can be on a different system of frequency to be controlled. So therefore, it can perform the job better. तो दिस यंग बॉय हु इज फ्रॉम स्टार्टअप, कोई एक छोटे से स्टार्टअप से बंदा आया है, तो ही इज नाउ एक्सप्लेन कि सन यू काइंडली गो बैक एंड यू वर्क ऑन दिस, वी आर ओपन टू योर आइडिया, वी विल टेक केयर ऑफ यू, राइट? सो देयर इज नथिंग दैट वो अम्बानी अंबानी का ही सामान आएगा या पब्लिक सेक्टर सिस्टम का सामान आएगा. Anybody who wants, and this is gone now very public. You go to Indian Army site, you will find, go on to the click, you'll go to the Army Design Bureau, you want to send something, you will send an email. There are thousands of requests coming. All may not be met, but surely with the structures and the organization which is there, it's a way forward. Can we do more? Yes. But can we change the entire army into an advanced Army Design Bureau? Possibly not. Maybe we need find more ways to engage, but it's a work in progress, and I think we are doing fine as of now. But surely, I'm a believer we need to go towards perfect.
एंड दैट परफेक्ट जो ऑब्जेक्टिव है ना वो हमेशा आगे होता जाता है. बाय द टाइम यू रीच देन यू रिक्वायर टू डू मोर. सर, एक इक्विपमेंट की बात होती है सर, लास्ट में ये यूनिफॉर्म्स, इक्विपमेंट, बंदूकें, अब तो AK-203s तो देख रहे हैं, अस्मी भी देख रहे हैं, वी कैन सी ऑल दैट स्टफ इन द फोर्सेस एंड अस्मी देख के तो मैं एक्चुअली पर्सनली मैंने देखी थी, आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं कश्मीर में गया था, आई सॉ वन, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट बिकॉज़ अपने अपनी बंदूक है, अपने ऑफिसर ने बनाई है, मतलब आर्मी के ऑफिसर ने बनाई है, दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. एंड दूसरा इक्विपमेंट की है, बीपीज नहीं है इनके पास, फोकल लेंसेज नहीं है, हेलमेट्स ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सब चीजें बहुत मतलब एक नैरेटिव बनता है सर. और ये सब चीजें लोग किस आड़ में लेते हैं कि सर ये देखो ADGPI नहीं ये फोटो ट्वीट करी है, तो ऑब्वियसली नहीं है, देखो ये बैटल के अंदर जा रहे हैं, दे वेयरिंग बैड इक्विपमेंट, इन्होंने किसी ने जीन्स पहनी हुई है, कपड़े भी नहीं है इनके पास, ये वो एंड ऑल दैट, दैट आल्सो गोज ऑन. ये क्या है सर, व्हाट इज दिस, आई मीन इज देयर इशू और इज देयर when you going into battle you kind of let the guy be and go into battle, यार उसको थोड़ा let him be comfortable, उसको जीन्स पहननी है पहनने दो, कोई बात नहीं. क्या है, व्हाट इज द गेम, स्पेशली ये सिटी ऑप्स में जहां पर आप जंगल में पता नहीं कितने टाइम तक वहां पर घूम रहे होगे, सो क्या, व्हाट इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड सर? One thing, you will not find this gene वाला ना बड़ा रेयर कहीं कोई होगा, but I had not seen any. It is essentially, I think, related to maybe some young officer, some police officer, or somebody who just come from a chutti or some from his place of. जैसे वो आ गया ऑपरेशन के अंदर, he is now joined, he didn't have time to go back or change. Very rare instance you'll find of a person in jeans. But yes, the variety of this thing, I'll uniform which comes up. I saw a tweet today in which somebody has taken 5-6 photographs of ADGPI, just posted out and said, देखो इनके पास कपड़े कितने खराब हैं, ये है. और उसने एक वो नॉर्थ कोरिया की पिक्चर डाली, एक चाइना वाले की पिक्चर डाली, एंड दे सेड look at how advanced army. I will love that gentleman to join North Korean army. And North Korea ke andar, yeah, because when that guy comes, uh, uh, that dictator comes in, all people who are old, everybody is wearing 20 lines of ribbon. They all stand up, everybody is clapping, I will love them to go there and join and wear that uniform, and I will also love them to join the Chinese army and be subjected to what they are subjected. I have interacted with the Chinese number of times. उनकी आंखों में जो फेयर है ना, डर, वो मोदी का डर नहीं है, वो जी जिनपिंग का और पीछे का डर है, राइट? They are shit scared. In our organization, you can write all crap about Prime Minister or Rahul Gandhi or Nirmala Sitaraman. You look at the dirty jokes which they put out about our own senior politicians or leadership or armed forces people and all, and they are happily accepted. And so debates, and we are in a truly a democratic environment which can live so freely. Coming on to first, I'll tell you about equipment like weapon systems. Okay, so आप एक picture उठाइए which is there, pulled out by the Israelis, of a guy in ghillie suit and having the best of the scopes, night scope, and one of the most latest modern weapon he has got, and then you start telling कि देखो उनके पास ये है और तुम्हारे पास इंसास है, या AK-47 टाइप है, या AK-203 है. The guy doesn't have that scope. uh, when when a girl models, on the ram, everybody can't marry that girl. Thereafter the variations of this thing or that girl are available to you in the place where you get married or you have a girlfriend. You can't pick up that model. Similarly, those Israeli models, when you see of the weapon, please see on the street when their soldiers are moving and they are on the checkpost, what are they wearing? Right? Normal Each one clothes. of them are, there is no scope, there is a simple weapon, वो स्लिंग से लटका हुआ है और वो चल रहा है. एंड उसका भी जो ड्रेस है, इट इज नॉट दैट नंबर वन ड्रेस, दे आर जस्ट वेयरिंग शेड्स ऑफ khaki, dark khaki, light brownish dress, if you understand what I'm saying. Their boots are not same, their helmets are not similar. सब कुछ, अगर 10 लोग खड़े हैं उस चेक पॉइंट के ऊपर, यू प्लीज जूम आउट ऑन टू अ फोकस ऑन अ लाइव
थिंक ऑफ क्या कहते हैं, इस आईडीएफ फोर्स का चेक पोस्ट आप चेक कीजिए, उसमें 10 किस्म के शेड के कपड़े मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पहनने का तरीका मिलेगा, किसी की शर्ट बाहर है, किसी की टक्टन है, किसी की बेल्ट अंदर है, किसी की, सो यू नो व्हेन दे डू इट राइट, दैट इज ओके। बट आपको चाहिए कि हमारी 1.4 लाख, 1.3, 1.2 लाख इंडियन आर्मी के पास में, सभी के पास में लेटेस्ट हेलमेट, मिलियन लेटेस्ट सर, 1.4 मिलियन। हाँ 1.2 मिलियन तो आर्म फोर्सेस हो गया, 1.2, हाँ 1.2 मिलियन, आई एम सॉरी, 1.2 मिलियन, आई वाज स्टक, यू नो, आई हैज टू हैव 1.4 लाख अंडर माय कमांड, सो मेरे दिमाग में पड़ा, तो 1.2 मिलियन के पास में वो सारा का सारा सामान सेम होना चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, one is that, right? The person who's in the rear requires a different set. The person into live combat is something else. Who's into combat battles, आरआर के पास में requirement of equipment totally different होती है, उसके अंदर भी हर 10 आदमी में 10 के पास में you can't have the sniper scope, so a sniper is specialized, will have a different system, so your aspirations are wrong and your desires are wrong. Now second point comes about this turnout which was being, you know, largely debated कि यार देखो कितने गंदे कपड़े हैं, कैसे कपड़े पहन के आते हैं, you know, I was a corps commander, I was a GOC commander, right? And three very important uh, command position in Valley, in more so people who were into totally operations. आज मैं ये आपकी डिबेट के लिए, बिकॉज आई हैड रेड दैट, मैं ये ब्लैक जैकेट पहन के आया हूं, आई यूज्ड टू वियर अ ब्लैक जैकेट, आई यूज्ड टू वियर अ हाफ जैकेट, I used to step out in uniform and I used to roll my, you see my pictures, they're all in social media. I'll be wearing a folded half sleeve fold करके अपनी शर्ट, एंड अगर मैं किसी पोस्ट में जाता था, कहीं सरप्राइज विजिट या कहीं ऐसे चला गया, और वहां मुझे कोई, ये सारे ऑफिसर्स ना बिल्कुल क्रीम क्रूम लगा करके और नंबर 1 ड्रेस पहन करके खड़े होते थे, तो आई टू ऑलवेज टेल देम दैट स्वीटहार्ट, आर यू इन ऑपरेशंस और इन अ पीस टाइम एनवायरनमेंट, how long you have been preparing to get ready to meet me? If you're preparing for 4 to 5 hours or 2 hours or 1 hour, that means for 1 hour you have not done your operation job for which you are getting paid here. It was symbolism, right? One was not looking at his uniform, one was looking at his operation. The second is, like, I was a company commander, right? 3 operations happened. I had a particular uniform which I was wearing, in which I survived by a hair's breadth, a very, very narrow escape. People died in those operations, but I was lucky to get out of it. Now, what does it mean? That pair of uniform became very, very symbolic to my luck factor, right? Any major, any contact operation I used to go, I used to wear that, right? You buy a new uniform, and which will always cut you. But more you wash, more you use, the more fit it gets. It gets used to your body, right? Then you go to the market. Aajkal to, you know, this young officers, when they're getting posted, young soldiers, not officers only, जो जवान है, जब वो पोस्टिंग जाता है तो वो पहले जाता है, आजकल वो that famous outlet has come about, Decathlon. He goes to Decathlon and he wears that half palm wala, that glove. He wants to buy that scarf, which is, you know, he takes pride in wearing those dresses, right? And interestingly, today I have just finished reading I was not aware, I have read some of the comments. There's a book which Kanlajay Rana is writing about immersive leadership, which will be released on 14th Feb. You know, in that he narrates, this guy narrates this information in this thing, कि जब वो कोर कमांडर साहब आते थे या जोशी साहब आते थे, तो कहते तुम अपने बाल खोल के दिखाओ. यू फाइंड दैट आरआर के अंदर ऑफिसर्स विल हैव लॉन्ग हेयर, यू नो, एंड आई हैव टू डू इट, राइट? दैट गाय इज वर्किंग 24/7, एंड नाउ आई टेल हिम कि नो नो, यू आर फ्रॉम इंडियन आर्मी, you shave yourself, you trim out your hair. He is operating in a jungle. He is going out for operation. There are a number of contact operations have happened in which the terrorist thought, ये अपना भाई है, ठीक है, right? And then the firefight is started.
number of operations. You are going off for 7 days. Now I want you to, it is not a spit and polish, especially 15 core, 16 core, 14 core are not spit and polish cores. They are highly operational cores in which you are living in areas where no human being is supposed to be living. And therefore, you allow that comfort for the soldier to come about. So we can pass an order. Sub number one kapde pehne ki zyada enough. I can tell you, the government of India, Indian Army gives enough number of clothing, funds, money to maintain spit and polish. But that spit and polish is required for a different type of army, which is supposed to be in Delhi. It is supposed to be in headquarters. It is supposed to be in drill square. जब आप ड्रिल स्क्वायर के अंदर जा रहे हैं तो आपकी वर्दी बिल्कुल एक अलग किस्म की होती है, मगर आप जब ऑपरेशन में जा रहे हैं, there will be changes based on the number of time you have used the same equipment. I was very very young officer and I was in ईस्ट सिक्किम, और वहां पर हमको टनल खोदनी थी. तो पुराने जमाने में ना बॉर्डर पे यू कुडंट यूज मच ऑफ एक्सप्लोसिव. इट वाज बेसिकली बाय यूजिंग व्हाट यू कॉल, वो एक संबल होता है, उससे तोड़ करके हैमर से पत्थर को तोड़ के निकालना पड़ता था. And then this rock used to be carried by soldier on the shoulder. We all, as officers, also we used to carry. Now, brand new shirts or those jackets, after about 5 or 6 days or 10 days, used to have nishan on this. Now you can come there and take a picture and say, "Dekho, usko jawan ko kapda nahi hai." No, jawan was being given, is being given. We used to get, but the bottom line is that it will fade. We are not chocolate soldiers. That and what ADGPI needs to do and continues to do correctly is showcase the people in operations. These pictures are from operations. They are not from drill square pictures. So you will find ADGPI pictures which are of drill square demonstrations, which are perfect, nice, people marching in proper order, पूरा सबका ड्रेस का सही है, वो तैयारियां होती हैं. And then there is a second lot of this thing, pictures which come out is from the operational area. Rashtra Rifle on post, on pickets. Those will be varying degrees. आज मैं नया गया, मेरे पास नए कपड़े हैं, बट मेरे साथ में 3 महीने पुराना वाला जवान खड़ा है अपने कपड़े के साथ में, उसके कपड़े में फेडिंग होगी. It can't be the same clothes, right? And the beauty of a Indian army is, or Indian clothing, Indian system is that we belong to different colors, shapes, sizes. So unlike the Chinese, सारे के सारे वो चिंकी कलर हैं, ठीक है, उनको उठाओ. और I'm not being casteist, I'm being absolutely the same. वो आपने कपड़े पहना दिए और उसको दिखा दिया, and you see, please, have you seen the drills of this thing? Everybody is into the perfect sync, और उसके पीछे वो गन चल रही है, everything is perfectly painted. Yeah, they are perfectly painted. Please check out how many wars the Chinese have won till now. How many combat? 1962, I don't count. 1962 was a strategic level of failure, not soldier rank failure, right? Our perception in terms of national security was different. Since that time, where has the Indian army failed? These pictures showcase unhappiness or desire of those people who put out, not as a positive critique, but as a hope that we fail, right? So that they can be proved right, right? But I can assure you that Indian armed forces are not going to fail country ever. We'll always persevere. We'll always win every conflict in a battle for. I have retired now 7 months, right? But trust me, I have seen 9 hard tenures in Jammu and Kashmir, and I have been in other areas of operations. And they say, we may not have the top-notch equipment, but given what we have, we're pretty well off, right? In terms of training, in terms of operation. There's some silly guy made a comment, 1:1 ratio nahi hai. The Americans with the best equipment have not won wars. Israel-Hamas deal has now come to forte. We know they may have destroyed Hamas, perceived. They may have destroyed Gaza in infrastructure. Not Not Hamas. Hamas. Hamas has come back in the same number. They सब may have चमकी यूनिफॉर्म पहन के आए थे, एकदम एकदम. Okay, yeah, have you seen the vehicles which are coming out? People are saying it's an old video. So has Israel, and Israelis are highly professional.
with the best of technology and equipment, they were unable to predict, protect, defend, disallow the infiltration which happened in broad daylight and 160 people in mall and taken out. Where has it happened? I am sure these people who comment very adversely about our organization and our country will want it to happen, aren't going to happen to make them happy. Yeah, I can, as a veteran, I'm very proud to have served in that army for 35 years, 36, 42 and a half years I was in this organization. It's an awesome organization. Again, another point, वो अमेरिकन जब अफगानिस्तान में थे, आप उनकी पिक्चर देखो, वीडियोस देखो, उनके फोटोग्राफ्स देखो, उनकी एसएफ की फोटोग्राफ देखो. Not two soldiers of SF, have got the similar dress or uniform. वो मुंह पे कपड़ा बांध देता है, उसके पास हेलमेट भी नहीं है, एक पची हुई टोपी है, और उसके पास में एक स्कार्फ है या कुछ है, एंड वो ठीक है बंदा, ही इज स्मार्ट. बट हमारे वाला बंदे का जब आया था पिक्चर, तो हमारा वाला तो यार गरीब है, बिल्कुल परेशान है. You go out and ask this men in Harar, yeah, they are bloody extremely proud. When they dress, they have got their, each one of them has got a lucky charm of a dress which they wear. They're fond of it, right? And a man who's seen enough, near life death experiences, all these small things matter, right? They're extremely proud and less. वो दिखाता है, वो खुश होके आता है, वो कपड़े कैसे पहन के होता है, आप उसको देखो, चाल देखो, उसको स्वैग देखो. Let's go by the swag, let's not go by the cover. And again, you look at the, वो जो दो पिक्चरें डाली हैं उसके अंदर, एक ट्विटर में, ट्वीट में, जो चाइनीज और उसकी, उनकी शक्लें देखो, जो भय है वो देखो. हमारे वाले में भय नहीं है, हमारे में फ्री है, right? He also knows that if I die, there's a system to take place of us, right? That is why our soldiers die. So, we will never like them to die. We'll always like to have everybody, right? But the fear is not there because our system is very, very strong and entrenched to look after any injuries, any death which takes place in operations. Right? That's why it goes. It's not so elsewhere. It is not so in those photographs which come out. Even in America, sir. Yeah. वो सब दुनिया बोलती है. कल वो कहीं चल रहा था डिबेट, वेटरन शेटरन को लुक आफ्टर नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होती है. और वहां पे एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है कि लोग आ रहे हैं और क्या आते हैं, तालियां बजती हैं जैसे फौजी अंदर आते हैं. आई हैव स्टेड फॉर 1 year इन यूएस. मैं उनके फौजियों के साथ में फौजी ड्रेस में हर जगह चला हूं. भैया, जब वो एयरपोर्ट लाइन में चेकिंग होती है ना, तो सबकी चेकिंग होती है. कोई ऐसा जंप नहीं हो जाता कि जो आगे बंदे खड़े हैं वो साइड में हट जाते हैं. नहीं जनाब, आप पहले आइए, चले आइए. देयर आर इवेंट्स व्हिच हैपन वंस इन अ वाइल, एंड देन वी ऑल नरेटेड कि मेरे सामने ऐसा हुआ था. भाई, मैं तो बहुत चला, मेरे सामने तो ऐसा हुआ नहीं. While there were times that I was over speeding or something, and there's the highway patrol chap stopped me. I didn't realize I was over speeding. उसने पूछा मेरे से कि आपको पता है क्यों रोके, तो I said probably over speeding. Then he says कि आप कहाँ से हैं, and all. He had every detail. उनके पास एक सिस्टम होता है. The moment they pick up the car number, there is already scanned that he knew that I'm an army officer from India as a guest of the US military. So then he says that I'm leaving you because you are a soldier and you're fighting for your own country. He gives me a salute and goes. हमारे यहाँ नहीं होता है, आदि. You, except for aberrations in some cases, I have gone to any place, the moment they come, not me as a general, I'm talking as a captain, as a major, even for soldiers, there's a brother bondhood. I was there in Prayagraj few days back. I had gone to at Kashi Vishwanath, वो जो आपका वो आरती वगैरह होता है ना, तो उसको next day morning सुबह बनारस थी, and I had gone down. The chap only saw somewhere my gate and standing and all. That priest who was conducting that event, he comes and he holds my hand like this. क्या आप फौज से हैं? मैं कहा, मैं रिटायर हो गया हूँ अभी. कहते, हम लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं. दैट बुजुर्ग मैन,
he may not have, matlab, as a modern city people, we may not like to shake hand with that man, but he holds my arm like this. आपको पता नहीं कि हम आपकी इज्जत कितनी करते हैं. That's the common love. We don't have style of standing in tie and suit and holding, जैसे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है ना, वो साल में 2 बार करता है, ठीक है. But the number of their veterans, their people with battle casualties who live in boxes, I have seen my first hand, is huge. Not in our case. Okay? And currently, our technically, I think we got one of the best AG's branch, which runs this whole system. एक कहीं पे चिट्ठी आती है, एज अ कर्नल रेजिमेंट, एक चिट्ठी आती है मेरे पास कि किसी वेटरन को ये तकलीफ है, एंड आई शुड सेंड दैट लेटर टू एजी's branch. Within hours, people act. Again, aberrations will be there. No, you can't highlight that aberration to prove कि पूरे इंडियन आर्मी के साथ भी हो रहा है. कई बार एबरेशन के अंदर हम भी गलत होते हैं एज ए वेटरन, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी. अगर आप कहीं पे जाकर के पुलिस वाले के साथ में या सीआरपीएफ वाले के साथ में बदतमीजी करेंगे, नहीं सुना जाएगा. बट ऑल इन ऑल, आई फाउंड देम टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड they treat us well. वो तो बात है सर. आई एम आल्सो फ्रॉम अ वेटरन्स फैमिली. कभी आई मीन कभी कोई हमने कभी सोचा नहीं किसी चीज का एडवांटेज लेने के लिए, बट हमेशा जब भी पता चल जाता है, अरे सर बैठो सर, देयर इज ऑलवेज द रिस्पेक्ट दैट माय फादर गेट्स, एंड दैट्स वेरी वेरी, इट्स वेरी नाइस. और वो एयरपोर्ट्स पे दिखता है, टैक्सीज के साथ दिखता है, स्पेशली आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहा है बिकॉज लोगों का रीच, सोशल मीडिया, दिस दैट, पीपल हैव बिकम अ लिटिल मोर अवेयर. तो वो थोड़ा ज्यादा अभी आजकल हो गया है सर. On that note, sir, thank you so much. आपने टाइम निकाला सर. This is a wonderful conversation. I think ये जो जितने सारे myths बने हुए हैं उनको तोड़ने में थोड़ा काम करेगी. And I hope your message is, reach to the right people and the right places. Thank you so much, sir. Always a pleasure. Thank you. Namaskar. Thanks. Jai Hind. Jai Bharat. जय भारत.